Okay, hi everyone. This is the Backyard Boys podcast. This is going to be the first episode of Charche. Charche is kind of the English plus Hindi episode where we will speak in Hindi as well as in English. So this is our first episode, and as usual, we have Sovan Mukherjee and I'm Rakesh, and today, I don't think we have anything particular to talk about, do we, Sovan? But I think we will talk about a lot of stuff as things come by. We don't have a itinerary. How do you say it? मुझे क्या पता हिंदी बोल के पूरा इंग्लिश में बोल रहा सॉरी माफी चाहता हूँ. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. हाँ तुम हिंदी इंट्रोडक्शन हिंदी में देना. इट्स लिटिल I'm still टफ not used to it. हाँ, टफ tough. टफ तुमको करना पड़ेगा ओह next माय time. गॉड Responsibilities. उसी की बात हो रही थी ना हम लोग आज. हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज Responsibilities. तो बताओ क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, क्या चल रहा है? लाइफ सेम चल रहा है आई गेस जैसा चल रहा था एंड अच्छा. कैसा अजीब सा लगता है एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू गेट वेरी कंफर्टेबल यूजिंग वन लैंग्वेज जैसे वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इंग्लिश टू विद यू राइट बट अभी हिंदी में बोलना है थोड़ा अंदर से ऐसा एक बैरियर टाइप का आ रहा है चला जाएगा कुछ देर में we'll get back to those days when we first joined. I don't know why I उस चीज को मैं रेफरेंस कर यूज क्यों करता रहता हूँ but I think like हम लोग, I don't know, I think तुम और मैं, right, we just hit it off for some reason. I think one of the first questions which I asked, like, कौन से books पढ़ते हो, right? That I think that is the first question I asked you, and उसके बाद I think we just hit it off kind of like very easily. And language के type में ना, मुझे तुम्हारे साथ इंग्लिश के कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करना बहुत पसंद है. आई थिंक वी स्टिल स्पीक लाइक दैट इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, राइट? हाँ हाँ वेयर आई स्पीक टू यू इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वुलेटेड इंग्लिश, बट तुमको समझ आता है वो बात क्या मैं बोलना चाहता हूँ. So I like that about our language relationship. सही था मतलब if I think about it our initial team I think I feel pretty blessed कि the first professional team I worked with was really memorable. मतलब बहुत मेरे लिए तो काफी memorable था क्योंकि जितने भी लोग थे राइट छोटे छोटे idiosyncrasies थे सब में मे बी चाहे वो निवेदिता हो या कोई भी हो. निवेदिता प्रॉब्ली किसी अगले उसमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ एपिसोड में ज्वाइन करेगी. यस. Yeah. See if you can get Uday as well. So I want to get Sachin into the podcast. Oh, and Utkarsh. Yes. Oh my God. Oh my God. सब नमूने हैं. I'll tell you, हाँ. सब नमूने हैं. And the team that we worked with was like all big, heavy, influencing characters. Like, I don't know how we functioned without any beef between each other. हाँ वही मेरे को सबसे सही लगता था इवन वीकेंड्स में when we used to crash at your place. It was nice memories. So क्योंकि अगर वैसा टीम नहीं होता ना I don't think we could have survived I guess. So it was necessary. Yes. Survival की बात I think that's where like officially जब तुम corporate में हो, right, I think team is very important. हाँ and nothing builds a team like some hard times. That is one thing that place taught me कि वो जो बताते हैं ना कि अगर कोई चीज सीखना है अगर like आपको तैरना सीखना है you can't do it in a swimming pool. आपको ऐसे समुद्र के बीच में जाके आपको फेंक के आना पड़ेगा तभी जाके जब लाइफ के लाले पड़ते हैं तभी आप स्विम करके शोर तक आ पाओगे. So I believe that is something that happened to all of us. That's true. And you know what, हमारे जो टीम था ना, we never had like an easy break ever when we started. Did we? We didn't, right? नहीं मेरे को तो नहीं लगता because कोई नहीं था ना राइट हम जिसके ऊपर like totally depend करके छोड़ सकते थे. We were just like जाओ खेलो. हाँ. Like
सर ट्रेनिंग कहाँ है, you know, like हाँ where is the pep talk? And we were just like जाओ, results चाहिए हमें, right? But I think that also उसके वजह से we kind of become very, you know, very hard, और उसके वजह से हम लोग बहुत सीखे भी है, हम्म and उसके वजह से जहाँ हम है आज, right? And जहाँ हम perform कर सकते हैं, and the reason why we can you know just stand our ground, right? It's हम्म because हम लोग को धकेला गया था आगे कि करो, जाओ, फिगर आउट करो, अपना काम दो, बस हमको वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए. एंड आई थिंक इट हेल्प. इजी नहीं था, मैं नहीं बोलूँगा कभी इजी है, बट उसके वजह से आई थिंक टीम ऑल्सो थोड़ा जेल हो गया था. पीपल जेल्ड विद वन अनदर. बट भाई यार, इट फेल्ट गुड टू हैव, यू नो, पीपल की, अगर मैं आऊँ और मैं उसको बोलूँ कि मैं डिपेंड कर सकता हूँ इससे. हाँ that was one. तो आई थिंक ये अच्छा एक पॉइंट है जिस पे हम लोग अभी बात कर सकते हैं, क्योंकि लाइक आई थिंक हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन फॉर यू? मोर देन 4 years इजीली इस स्पेस में, डिजिटल मार्केटिंग के स्पेस में. Oh yes, I complete 5 years in June, so it's 4.5. 4.5. Same for 4.5. Same for you, I guess, more or less, right? No, no, Marketing. no, no, no. मैं तो छोड़ दिया था, तो it's less than 4, I guess, near about 4. So then I'll ask you, what do you think? मतलब what do you think about digital marketing in general, and क्या लगता है कि कैसे वो change हुआ है वो पूरा एरिया इन कुछ सालों में? Okay, it's a very interesting question, but मैंने कल मैं कुणाल कामरा का एक स्टैंड अप सुन रहा था, ठीक है, जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहा था कि MBA और मार्केटिंग और रियल लाइफ एक्सपेक्टेशंस में क्या डिफरेंस है. तो वो आई कैन नॉट, मैं कुणाल कामरा जैसा आई डोंट नो हाउ टू डिलीवर पंच लाइन्स, बट उसमें एक एनेक्डोट था ना, जहाँ पे ही वाज बीइंग गिवन अ ब्रीफ, रिमेंबर, जहाँ हम लोग को ब्रीफ दिया जाता था रूम पे मार्केटिंग मीटिंग पे. तो वो उसके मैनेजर का ब्रीफ था कि हम लोग केरला पे है, हम लोग को उसका कल्चर शो करना है, हम लोग को स्ट्रेंथ शो करना है, हम लोग को कोलैबोरेशन शो करना है, हम लोग को ये शो करना है, इसलिए हम हाथी लाएंगे होटल पे. वाह वाह. ठीक है, तो see I can't deliver like कामरा, okay, so इसका डिलीवरी मस्त था, बट वो हाथी लाया, कामरा हाथी लाया, हाथी रोज वाटर ये सब फिर रख रहा था. तो उससे मुझे ये याद आया कि हम जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेस है ना, we do a lot of unnecessary things, you know. हम लोग बहुत unnecessary चीजें करते हैं, but we try to emulate बहुत सारे derivative चीजें हैं, and it's filled with, and I don't know if it's with any other field, but हमारा जो digital marketing space है, it's filled with a lot of contradictions, जो हम लोग बोलते हैं और जो करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों को इनोवेटिव होना है, वी शुड नेवर डू जो पुराने जमाने के टाइप्स, वी शुड बी इनोवेटिव, वी शुड मूव फॉरवर्ड, वी शुड लिसन टू द ऑडियंस, लिसन टू दिस. बट एट द एंड ऑफ द डे, जब भी तुम एग्जांपल देते हो, आने वाले एड्स ओजली का निकाल के फेंक देते हो, राइट? देखो ये अच्छा है. तो आई फील लाइक आई ग्रू अप लाइक my advertising और marketing career, जब मैं जो पहले the one you asked, right, कैसे change हुआ है, the first year when I started I felt like कि consumer brands में बहुत focus था. consumer brands, हाँ, consumer brands, हाँ, consumer brands जैसे हो गया ना Instagram, I don't know if it's because of the space I worked in, but consumer brands, and people usually liked ads, like very catchy copies, you know, headlines very catchy होने चाहिए, कैप्शंस. एंड उस टाइम पे इंस्टाग्राम में लोग कैप्शंस पढ़ते थे, एक्चुअली पढ़ते थे इंस्टाग्राम पे, तब रील्स नहीं आया था, राइट? नाचने वाले लोग अभी तब तक नहीं थे. फेसबुक में भी यू गॉट गुड ट्रैक्शन इन फेसबुक आल्सो, राइट? एंड लिंक्डइन उतना बड़ा नहीं था. लिंक्डइन तब बस एक जॉब बोर्ड था. तो ओवर टाइम आई फेल्ट लाइक उस टाइम पे, इफ
उस टाइम पे the person who won the market was the person who could write the best, you know. Copywriting. Copywriting, yes, who could write the best. People को like people appreciated good words. But then कोविड में आई थिंक पीपल अरे हद ही हो गई है यार, बहुत बहुत हो गया, बहुत देख लिया, मुझे नहीं चाहिए मोटिवेशन सुबह सुबह उठ के, यू नो, मुझे नहीं फील करना है इंस्पायर्ड. आई थिंक दैट इमोशन आ गया था कोविड टाइम्स पे, क्योंकि कितना ही इंस्पायर्ड होंगे, राइट? हाउ हाउ इंस्पायर्ड कैन यू बी, हाउ मच कैन यू चेस सक्सेस? आई थिंक उसका एक रियलिटी चेक हुआ था कोविड टाइम पे. And उसके बाद I feel like brands genuinely became very genuine, you know. Okay, genuine as in like they were not telling you about success or, you know, inspired to be that, aspire to be that. They were like, ये life का reality है, this is life's reality, this is how we can help you handle the shit that you're going through. I feel like brands started doing that. फॉर एग्जाम्पल ये शुगर कॉस्मेटिक्स का हो गया, राइट? शुगर कॉस्मेटिक्स का एक वो एड आया था जहाँ पे वो वाटर का पानी छिड़का और उसका मेकअप नहीं जाता. हाँ, right. So simple value proposition at your place, right? Yeah, simple value proposition and practical value proposition. I think that dominate कर रहा है, that dominate कर रहा है. But अभी क्या हो गया ना कि I also feel like अभी LinkedIn has become the new Facebook. Okay. Instagram is trying, जो Facebook था पहले जमाने पे हमारे, when we started doing, right? हाँ. Instagram has become the new TikTok for Indians. And Instagram में सी आजकल मैं ads देखता ही नहीं हूँ. Instagram became a TikTok, I think बहुत दिन पहले, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि TikTok में जो भी काम करता था Instagram में जस्ट उसका कॉपी काम करता है, राइट? ट्रेंड्स की बात करें या फिर वो म्यूजिक रील्स में या कुछ भी हो, राइट? तो वही है. एंड मुझे नहीं पता कि इंस्टाग्राम में से मैं टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकता, बट इवन इफ मैं बहुत आई बाय लेट्स से पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, राइट? बट मैं कभी इंस्टाग्राम में नहीं जाता हूँ, मे बी बिकॉज मुझे पता है कि एड्स किस तरह से लिखा जाता है एंड बहुत ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं मुझे, राइट? आई हैव ट्रस्ट इश्यूज विद ब्रांड्स राइटिंग बिकॉज हाँ, हियर आई हैव अ क्वेश्चन कि मेरे को ये पूछना था कि like do you relate, मतलब do you relate in the sense, how do I frame this question better, let me think. So suppose when you are thinking about a campaign or you're thinking about ads in general, तो तुम क्या ये सोचते हो कि मैं इस ad को देख के मेरे को क्या फील आएगा, and then do you have this feeling कि मेरे को जैसा फील आएगा शायद 60% या 70% ऑफ द टारगेट ऑडियंस को भी यही सेम फील आएगा? क्या वो कोरिलेशन, do you feel there is a correlation there? I don't feel so. That is what I wanted to ask. Yes. I don't feel so क्योंकि let's say so I usually मैं अभी टेक ब्रांड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? हमारी कंपनी एप्स बनाती है, राइट? तो हम मेरा टारगेट ऑडियंस है CEOs एंड CTOs, राइट? तो ये जो CEOs एंड CTOs है, मैं तो CEO एंड CTO नहीं हूँ, मुझे क्या पता कि सुंदर पिचाई कैसे सोचता है या I know the target audience, मुझे ICP पता है, मैं उससे रिलेट करता हूँ, राइट? जो पर्सोना बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दैट डिस्टिंक्शन मेक करना. बट उसमें ना मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो नए राइटर्स जो शुरू करते हैं, राइट? I mentored some new writers growing up, why do I say this? क्योंकि मेरे दिमाग पे वो दैट विजुअल जा रहा है, राइट? दैट ग्रोथ स्टेज. तो this new writer जो अभी आ रहे हैं, right, in the market, and I had the blessing to mentor and some at least 40-50 just उनके evaluation करने के टाइम पे. तो तब क्या हुआ, what I've noticed is ये जो नए writers है ना, they make the mistake जो thinking that कि उनको जो अच्छा लगता है वो उसका target audience को भी अच्छा लगना चाहिए. That's what. तो वो that is a big mistake. वो लोग ICP को सोचते नहीं है. बट I was talking to a writer and he said कि I told him तुम ये कॉपी इतने लंबे लंबे कैप्शंस क्यों लिख रहे हो, right? And he was doing this campaign for a yoga tights brand, ठीक है?
तो योगा टाइट्स ब्रांड है। मैं बोला योगा टाइट्स ब्रांड है, तुम्हारे कॉपी में you're not talking about fabric, you're not talking about the feel of the cloth or the usability of the cloth anywhere. You're talking about why yoga is good for your health and stuff like that and that. Whereas तुम्हारा purpose of selling that brand is कि लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदे, right? So what was the product? तो जब तुम बोलते हो कि योगा टाइप The ब्रांड product है, was yoga pants. जो प्रोडक्ट योगा और में जो योगा पैंट्स, ओके ओके, हाँ योगा में जो योगा करते समय लाइक गर्ल्स जो पैंट पहनते हैं ना, राइट, राइट, वैसे योगा पैंट गर्ल्स का एक वुमेन अपैरल ब्रांड था, and they were selling yoga pants. I don't know if that's the correct terminology to use, but apparently that's the brief he was given. I can only see the brief, right? I can only see the brief. Then he because it was a class. So वो brief वैसा था कि sell yoga pants for a women apparel brand. तो वो बोला मुझे अच्छा नहीं लगता जब brands talk about this, but उसमें brief में clearly mention था कि talk about usability, durability के बारे में बात करो, कंफर्टेबल के बारे में बात करो। तो बोला ये ब्रीफ गलत है। मैं बोला ब्रीफ इज ब्रीफ, आईसीपी का देख के बोले लोग, राइट? तो वो थोड़ा लीनियंसी हो जाता है कि नए राइटर्स को कि मुझे लिखना ये पसंद है। तो लाइक हाउ डू यू डू इट? यू वर वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स आई वर्कड विद सो फार। तुम कैसे करते हो? डू यू मेक द डिस्टिंक्शन स्टिल नाउ? डिस्टिंक्शन एज इन कि मुझे आईसीपी को देख के करना, या डू यू मेक द डिस्टिंक्शन कि मुझे अच्छा So नहीं when लगा? you say ICP, do you mean persona, right? The customer पर्सोना, यार हाँ, आइडियल कस्टमर पर्सोना। हाँ, राइट। तो यस, तो मैं कैसे करता था वो है जो कस्टमर पर्सना था, राइट, आई ट्राई टू इमेजिन दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन इन माय माइंड, एंड देन आई ट्राई टू इमेजिन कि क्या क्या चीजें, क्या क्या वर्ड्स would probably influence them or motivate them and probably use them. तो वो जो चीज था ना, जो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो कि एक क्रिएटिव लाइसेंस की बात, तो आई थिंक वो सभी के साथ हुआ था, राइट? बिकॉज हम लोग जब भी कोई भी, ये इनएविटेबल है, कोई भी क्रिएटिव काम हम जब करते हैं तो एक फ्लो में वी कीप फ्लोइंग, एंड देन सडनली, इवन विदाउट नोटिसिंग, 5-6 कॉपीज के बाद वी हैव ऑलरेडी गॉन ऑफ टू सम अदर ट्रेल, और ब्रीफ कुछ और ही है। So it's not only in right about writing ads, it's about writing anything or doing any creative thing. So मेरे को क्या हमेशा काम में आता था कि मैं हमेशा 2 एड्स लिखने के बाद वापस से ब्रीफ पढ़ता था, just to make sure whatever I am writing is still on track. क्योंकि because एक बार जब हमारा थॉट प्रोसेस किसी एक टाइप से एक जगह पे डिविएट हो जाता है, राइट, 1000 बायस आ जाते हैं दिमाग में कि ऐसा ट्राई करते हैं, वैसा ट्राई करते हैं, देन suddenly it get derailed and किसी को पता भी नहीं चलता। So that's how I did it. Read the brief. Read the brief, new writers. Yes, read the brief. I think वो बहुत important है। Brief कभी गलत नहीं होता. Brief can be incompetent, but brief can't be wrong. Right. तो right. एक ये चीज मेरे को भी बहुत ही देर में पता चला था, या फिर ऐसा भी कह सकते कि शायद मेरे को सही से पता भी नहीं चला था कि you know what kind of person I am, right? मैं ज्यादा उतना प्रोटेस्ट नहीं करता, but I think every writer should protest for a good brief or clarity in brief. You should never ever take one step until and unless you have a clarity about the problem statement. ये बहुत important है। Correct. But I'm noticing this. It should not be the perfect way, but I'm noticing this. The new crop of writers that are coming into the market, I don't know because it's their training, or I don't know what has happened in the last few years. I don't see them taking briefs very seriously. हाँ, बहुत फॉरेन कॉन्सेप्ट है, राइट? क्योंकि अगर हम भी कभी एड बनाते थे, व्हाट इज, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एड्स, देयर इज नो डेफिनेट आंसर, राइट? अगर किसी को पूछते हैं कि कौन सा एड अच्छा है, वो लोग कुछ एक अच्छा, आई थिंक क्रिएटिव एड जो टीवी में उन्होंने देखा होगा, दे वुड, वही चीज उनके दिमाग में चल रहा होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ नाइस, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स।
Yeah. बट वो हमेशा काम नहीं करता, हाँ, स्पेशली वो तो फेसबुक। वन एंड ऑफ सिचुएशन है. हाँ, so so it's difficult, and the only thing that can teach you is experience. You put up the ad, you do an A/B testing, and then see the results. वही काम करता है और कुछ काम नहीं करता है. हाँ, सही है, सही है. So That's true. another question I would want to ask, कि now that you're working, Hmm. what are the key KPIs that you have, that you follow? For ads, Yes, ads or uh, videos. जो like there are thousands, right? But as a हाँ हाँ हाँ. company or as a team, what makes the most impact for you? See, for me, right, आजकल का मेरे लिए the ultimate goal is conversion. तो that is the ultimate goal for every company. But मेरा ultimate goal अभी conversion है, and conversion के लिए because I am a little bit biased because मैं B2B workspace में काम करता हूँ, right? And B2B में तुम्हारा KPI उतना मैटर नहीं करता है. इन टर्म्स ऑफ जो जनरल KPI जो होता है ना हमारे मार्केटिंग के, लाइक कि तुम्हारा इम्प्रेशन इतना हुआ, तुम्हारा 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 लाइक्स इतना हुआ, कमेंट्स इतना हुआ, क्योंकि लिंक्डइन तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म है, राइट? Okay. या तुम्हारा यूट्यूब वीडियो का इतना लाइक्स, ये सब चीज़ें. बट हमारे लिए ना क्या होता है कि क्वालिटी बहुत मैटर करता है इंस्टेड ऑफ की दोज नंबर्स. तो क्वालिटी मैटर से यू कैन रिलेट इट डायरेक्टली विद ब्रांड, the brand power that you generate. Because I work with a company that has like established itself into some degree. अभी मैं क्या देखता हूँ कि जो the quality of posts that we put out, right, and the quality of video, the quality of articles that we put out, क्या उससे that impact brand को create कर रहा है कि नहीं, like brand हमारे target audience को create कर रहा है कि नहीं. तो B2B में क्या होता है कि acquisition is very different, है ना? Acquisition comes mostly through SEO, mostly comes through like Organic sources. हाँ, organic sources, going to conferences, तुम email में reach out करो, right? तुम sales calls में like sale person अपने आप connection बना रहा है, Salesforce में, उससे leads acquire होते हैं. Very rarely कि वो सोशल मीडिया में आके क्लिक करके तुम वो डिसीजन लेता है, राइट? क्योंकि इमेजिन नो कि तुम एक बड़े कंपनी के तुम एक टेक्निकल मैनेजर बन गया है, राइट, और एक सेल्स मैनेजर बन गया है. तुमको एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना है, एक सर्विस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना है. तुम उनके लिंक्डइन में जाके डिसीजन तो नहीं लोगे, राइट? यू विल बी इम्प्रेस्ड बाय इट, यू मे नॉट लाइक इट और कमेंट ऑन इट, बट यू विल लुक एट इट, है ना? तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा क्वालिटी जज होगा, बट अगर तुम लाइक नहीं करोगे तो वो लाइक रजिस्टर नहीं होगा, राइट? बट तुम्हारे माइंड पे यू विल रीड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर वो लोग सेल्स कॉल्स में आता है एंड वो लोग बोलते हैं कि वी रियली लाइक योर ब्रांडिंग, वी रियली लाइक योर like the work that you do on LinkedIn or the work that you do in this. I saw your conference, I saw your meetup. but वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्रैक नहीं कर पाते हम लोग. तो अभी हाँ, सॉरी, तो मुझे क्वालिटी में फोकस करना है एंड दैट उसमें इट्स अ वेरी ग्रे एरिया टू बी ऑनेस्ट वो ट्रैकिंग करने के लिए. but like conversion is the golden thing Conversion for is you the guys. ultimate goal. Yeah, conversion is the ultimate goal. Everything leads to a conversion at the end. It's a साइकिल है ना बहुत. अगर मुझे लिंक्डइन में 1K 2K लाइक्स मिल रहा है, बट वो 1K 2K लाइक्स अगर मिल भी रहा है, then if it's not converting for me, मेरा क्वार्टर में कन्वर्जन बस 40 है when my target was 90. हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना. बट इससे अच्छा ट्रैकिंग थोड़ा फिर डिफिकल्ट हो जाता होगा, राइट? बिकॉज लाइक यू सेड कि क्योंकि
the ads that you put up, I imagine वो सिर्फ branding के लिए होगा, right? Just so the other person हाँ knows हाँ कि तुम्हारा कंपनी है उधर. तो obviously उससे हाँ कुछ conversion नहीं आएगा. Conversion ultimately comes जब वो पूरा funnel के through आपका customer जाता है. Probably comes in through हाँ an ad, goes through all your organic posts, and then राइट finally one email does the trick. तो वो पूरा conversion का वो जो पूरा क्या कह सकते हैं, like पूरा, साइकिल नहीं नहीं, इट्स हाउ कैन आई से इट, वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा. वो कन्वर्जन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर पूरा जो श्रेय बोल सकते हैं, कन्वर्जन का जो पूरा वेट yeah, weight, वेट it goes to the email, right? Like the email या was responsible for getting the conversion, but ultimately it was the entire cycle. And like राइट ads राइट did the work, the YouTube video did the work, the blog did the work. राइट So so then when you put out the reports, probably जो tracking आएगा वो email से आएगा, right? हाँ So हाँ when दैट्स you ट्रू when you when you negotiate for the budget for your ads, how do you tackle those conversations then? तो क्या होता है ना कि जब यू आर राइट जब रिपोर्ट बनाता है तो लेट्स से एसईओ के ब्लॉग से एक कन्वर्जन आया है राइट लाइक एसईओ ब्लॉग से कन्वर्जन आया है बट एसईओ ब्लॉग से लीड एक्विजिशन हुआ है यू नो व्हाट आई मीन एसईओ ब्लॉग से लीड एक्विजिशन हुआ है या मेरे न्यूज़लेटर से लीड एक्विजिशन हुआ है बट कन्वर्जन जो हुआ है इट्स बिकॉज ऑफ कि एक्विजिशन के बाद उसने हमारा लिंक्डइन को देखा उसने हमारा दे गॉट द लीड गॉट 2-3 न्यूज़लेटर्स राइट उसके बाद लीड को सेल्स कॉल्स में लाया गया है एंड सेल्स कॉल्स में लाने के बाद हम लोग उसको ब्रोशर्स बेचते हैं पैम्फलेट बेचते हैं या ब्लॉग्स बेचते हैं बिग पाइपलाइन बहुत बिग पाइपलाइन इमेजिन कि पाइपलाइन चलेगा 3 महीना 2 महीना आराम से राइट B2B स्पेस में यही होता है राइट इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ B2C कम ब्रांड तो बहुत बड़ा पाइपलाइन है एंड पाइपलाइन पे यू कैन नेवर जज कि कहाँ पे लीड कन्विंस्ड हुआ है राइट तो इसलिए B2B का जब बजट एलोकेशन होता है व्हेन लाइक बजट टीम का जब बजट एलोकेशन होता है हम लोग को दैट्स व्हेयर एक्सपीरियंस कम्स इन एक कॉन्शियस कॉल लिया जाता है कि ब्रांडिंग से हमारा इतना वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है राइट एंड ब्रांडिंग से हमारा इतना वेट है एंड व्हेन वी गो टू सेल्स कॉल्स राइट तो क्या बोल रहे हैं वी लुक आउट फॉर सर्टेन इम्प्रेशंस कि हाँ क्या उनको हमारा ब्रांड अच्छा लगा कि नहीं लगा राइट Okay, so do you specifically ask them कि ads no देखा? we don't that's where I said that's where experience and comes in so subconsciously they take in these inputs and cues so that's where the experienced salesperson comes in and the best salesperson is a salesperson that after the sales call they come to the marketing and tell them कि हमारे लीड को ये फीलिंग हुआ है अगर तुम्हारे सेल्स पर्सन ये नहीं कर रहा ना तो कुछ गलत है राइट फीडबैक नहीं आ रहा वो फीडबैक लूप क्लोज नहीं हो रहा वो फीडबैक लूप क्लोज नहीं हो रहा एवरी सेल्स पर्सन को वापस आके बोलना चाहिए हे देखो लीड को ये पता ही नहीं था यार हम लोग क्या कर रहे हैं राइट लीड को ये पता था ये अच्छा लगा उसको तो वो फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो जब ये होता है तो आई कम टू द बजट एलोकेशन जब बजट एलोकेट होता है तो हम लोग ऐसे पूछते हैं ठीक है तो ब्रांडिंग का हम लोग लेट्स से 100 में डिवाइड हो रहा है राइट लेट्स से ब्रांडिंग को हम लोग 20 देंगे ठीक है तो एसईओ से ज़्यादा लीड एक्विजिशन आ रहा है तो मे बी एसईओ को ज़्यादा बम्प अप करेंगे राइट एंड अ कॉन्शियस डिसीजन आर मेड इसकी बट ब्रांडिंग ऑलवेज गेट्स द मेजॉरिटी ऑफ द बजट और उतना ज़्यादा बजट नहीं होता ब्रांड क्योंकि एंड व्हेन आई से बजट आई डोंट मीन मनी यू नो बिकॉज मनी यूजुअली फॉर ब्रांडिंग फॉर लाइक एड्स में हम लोग नहीं करते ब्रांडिंग के लिए वी गो विद ब्रांडिंग वी मीन लाइक होस्टिंग मीटअप्स यू नो कॉन्फ्रेंसेस ओके कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करना लोगों को हमारे ऑफिस में बुला के यू नो टॉक करवाना राइट रिलेशनशिप बिल्डिंग उससे कनेक्शंस बिल्ड होता है
कनेक्शन बिल्ड होने के बाद पाइपलाइन बड़ा होता है. So what do you use ads for? लिंक्डइन वेरी डेडिकेटेडली लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन के अलावा देयर आर नो अदर प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन ट्रस्ट इन टर्म्स ऑफ No, ऑथेंटिसिटी. so LinkedIn as a platform, but you use your ads as like a pre-sale sort of a thing, वी यूज or एड्स एज अ लीड एक्विजिशन, लाइक जो ताकि हमारा वो ऑर्गेनिक में पूरा रिलाई तो नहीं कर सकते, राइट, अनलेस यू आर अ वेरी एस्टैब्लिश्ड प्लान. तो लिंक्डइन को डिस्कवरी के लिए यूज करता है. okay, कि नए मार्केट्स में हम लोग को एक्सपैंड करना है, तो कोई हमको नहीं जानता, तो उन लोगों को पहुंचने के लिए वी पुश आउट. जिस मार्केट्स में वी आर एस्टैब्लिश, वी कॉल पीपल इन, यू नो, वी पुल पीपल इन. लिंक्डइन में थोड़ा वो पुश एड्स यूज करते हैं हम लोग. Okay, and you find it successful using LinkedIn? लिंक्डइन, हाँ, लिंक्डइन इज ब्रेड एंड बटर B2B ब्रांड्स के लिए. Okay. Otherwise, I don't know if there's like a different platform. Maybe Twitter, but you know, Twitter gets very noisy. बहुत, हाँ. Twitter is good for making conversations with people. I see like a lot of CEOs talking to each other on Twitter. No? But anything that people say on Twitter, I don't know about American brands, but at least in India, people, you know, बहुत noisy हो जाता है. So you don't take it seriously that a lot. But LinkedIn में अगर एक मैसेज आता है, right, and you make a good connection, तो एक होता है ना, थोड़ा official लगता है LinkedIn में. I don't know if that's only me who's feeling it, but लगता है मुझे थोड़ा official LinkedIn में. हाँ, I mean अब तक तो है, probably वो थोड़ा dilute हो रहा है अभी धीरे धीरे मेरे हिसाब से. हाँ, that's I also mean the way another. things are going, yes. Yeah, like I said, LinkedIn is becoming the new Facebook. Yes, LinkedIn is becoming the new. सब memes post कर रहे हैं. But you know what I really appreciate about the LinkedIn feed these days? वो पुराने जमाने के रिमेम्बर मीम्स भी बहुत आ रहा था. मेरे रेज्यूमे लिंक्डइन में बोला वर्कड ऑन ए हाईली डिटेल्ड पेपर ऑन स्किल्स एंड एसेट्स, बट क्या है, रेज्यूमे बनाया. तो वो लिंक्डइन में वो फुला चला के बोलने का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है. That's something good. I to be very honest, LinkedIn as a platform मैं बहुत कम use किया हूँ, like apart from searching jobs or anything like that. As a social media platform, so I've rarely used LinkedIn. I should use, but I haven't used it. LinkedIn मुझे बहुत मजा आता है. LinkedIn, I don't know, after work, right? आफ्टर वर्क जब मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम जाऊँगा, आई सी लाइक अ लॉट ऑफ गुड फूड एंड मेरा फीड इज फिल्ड विद फूड एंड एनिमे, यू नो, एंड पीपल ट्रैवलिंग. फिर देखता हूँ, थोड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ. लोग अच्छे खाने खा रहे हैं एंड मैं इधर दाल चावल खा रहा हूँ. Yeah, that's social media for you. फेसबुक में तो हद ही हो गई यार. सब everywhere is meme in my feed, and people selling you iPhone for ₹1. Okay, got it. समझ में आ गया मेरे को, और बोलने की जरूरत नहीं है. I hate social media. I get it. By the way, you're where? You're in Gurgaon, right? Yes. What's the feels like there? Winter feels कैसा है उधर पे? Oh, winter feels is nice. तो मैं कहाँ पे, मैं चेन्नई में आई गेस बहुत सारे years spend किया. कुछ साल मैं वेस्ट बंगाल में था. चेन्नई में, you know, right? There's no winter. Nothing like winter. Right. There's no seasons. There's a season. Yeah. दिसंबर में मैं ऐसे kind of 3/4 और टी-शर्ट्स पहन के मैं वहाँ पे फ्लाइट में चढ़ा था, और फिर मैं कोलकाता में लैंड किया था, और बाकी का हिस्ट्री है क्या हुआ मेरे को. Oh, I remember you came back with yeah. तो अभी यहाँ पे तो बहुत सर्दी है, एंड बहुत ज्यादा सर्दी है, एंड पोल्यूशन की वजह से थोड़ा हेजी भी रहता है पूरा का पूरा सिनेरियो. तो इट्स कोल्ड बट इट्स फाइन. अभी तक तो टॉलरेबल है. I don't know, as time goes on it will get colder. But okay, I have another question. I have some questions actually.
for you. बताओ. So, are you also directly related with the SEO efforts for your company? I am. Like, Okay. so content creation जो भी होता है ना, हाँ. तो content creation, any form of content creation, I'm related. So blogs सारे, but I सब कुछ वैसे ही related है. Like, but I found out कि when we first joined, हम लोग बस सोचते थे ना कि as writers ये bias तो रहता है कि ऑन पेज जो कीवर्ड्स डालना होता है, यू नो, लिंकिंग करना होता है, बस ये एसईओ है. दैट वाज माय परसेप्शन. बट एसईओ इज अपेरेंटली लाइक अ ह्यूज आइसबर्ग. नीचे में बहुत कुछ है. हाँ, तो right. वो लोग वो करते हैं. आई मोस्टली यूज्ड टू आई मोस्टली इन्वॉल्व व्हाट पीपल सी इन द टॉप. वो जो होता है ऑन पेज में जो होता है, कीवर्ड्स करना, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स. अभी आई एम स्टिल my team is very involved there. Okay. So, like keyword research and everything, that's what you do? No, that part the SEO team does. Okay, so you have a dedicated SEO team. Right. हाँ. We have two very talented people Nice. there. So, what is your take on SEO nowadays? I feel like it's gotten a lot better, you know. Okay. And I feel like SEO people, I think Google को बहुत credit होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो Google जो बोलता है ना कि ऑथेंटिक करो, कीवर्ड स्टफिंग ना करो, सब में कीवर्ड मत घुसाओ, राइट. अब इवन इफ यू डोंट यूज द एग्जैक्ट सेम थिंग, अगर सिनोनिम भी है, इफ इट्स द सेम फ्रेजेस, आई विल टेक इट. तो जब गूगल ने ये बोला, देन आई थिंक द एसईओ पीपल हैव आल्सो अंडरस्टूड कि हाँ, रॉबॉट के लिए नहीं लिख रहे हम लोग अच्छी तरह से, यू नो. रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव दिस टसल कि ये फिट नहीं होगा इधर पे, ये कीवर्ड नहीं जा रहा है इधर पे. हाँ, मतलब it sounds stuffy, right? मतलब सुनने में awkward लग रहा है. हाँ, it sounds very stuffy. So that understanding has become understood now. Understanding has become understood. You know what I mean, right? People understand कि ये stuffy है. That viewpoint has widened. So I feel like it's good. So suppose if you are making a new page, right, and you want to rank like at the top for that particular thing, and suppose it's like a highly competitive keyword, right? So what are the general steps that you will take in general? What will you advise your team? जनरल स्टेप्स जो हम लोग को recommendation SEO टीम से आता है. तो जनरल रिकमेंडेशन जो आता है कि इसमें हेडिंग जनरल वही जो होता है कि हेडिंग टैग में कीवर्ड होना चाहिए. फर्स्ट 50-60 कैरेक्टर्स में एक कीवर्ड होना चाहिए. उसके बाद भी फोकस ऑन थोड़ा इंटरलिंकिंग. ओके. जो इंटरलिंकिंग जो होता है वो उसमें ज़्यादा फोकस होता है. एंड कीवर्ड्स को जब डालते हुए है, whenever we put keywords, we put related keywords rather than directly. Okay. तुम बात कर रहे हो राइट एक सब्जेक्ट के बारे में. If I'm talking about potatoes, then maybe I'm talking about peels, I'm talking about starch, right? So maybe it's about starch content in potatoes. So starch content in potatoes sounds very natural, comes once in every 5 or 6 paragraph. So वो space out हो जाता है आराम से. तो थोड़ा it also depends on how the writer can understand the requirement and write. तो बहुत dynamic है. That's what I really like about marketing, It's not very set in stone कि ये right. SEO तो एकदम ही नहीं. हाँ, it's like बहुत टैलेंट में बहुत है. पर्सनल टैलेंट में, लोगों के टैलेंट में बहुत डिपेंड करता है whether you write well or do good in marketing. That person's talent matters a lot. Right. That's what I feel. So talent as a writer or talent as in the SEO team ka talent? Both. The whole I know team you'd needs to say be that. talented. The whole team Never needs to be from talented. you can I get a like a one-sided answer. Always the diplomatic answer. And of See, course, as a manager, you can't make one-sided answers. No, that's not the case. I'll tell you what मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ. क्योंकि ना
सारे चीजें हैज टू कम टुगेदर. अगर तुम्हारा राइटर बहुत टैलेंटेड है और एसईओ टीम फद्दू है, तो राइटर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, एसईओ टीम भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि राइटर क्या बोल रहा है. तो दोनों को, अगर दोनों फड्डू है तब ठीक है. दे विल फील लाइक कि सब ठीक हो रहा है, सब चंगा सी. दोनों बहुत टैलेंटेड है तब ठीक है. प्रॉब्लम होता है जब एक टैलेंटेड है एक फड्डू है. मिसमैच. वो कंपैटिबिलिटी मैच होना चाहिए. हाँ, बट आई ऑलवेज फील कि अगर कोई मतलब एसईओ जो कर रहा है, अगर वो इंसान लाइक बहुत टैलेंटेड है एंड ही नोज हिज स्टफ, राइट, तो बहुत बहुत ही सही इनसाइट्स ला सकता है. वो राइटर के लिए अपना काम बहुत इजी कर सकता है. दैट इज व्हाट आई फील. बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एसईओ पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कैसे कम्युनिकेट करता है वो. राइट, क्योंकि उसका पूरा एक प्लान रहता है, राइट, लाइक एक ओवरऑल प्लान रहता है उसका लॉन्ग टर्म में. राइट. तो वो जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको राइटर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ता है. मैं कीवर्ड इसलिए दे रहा हूँ. तो राइटर को तो बोलेगा, एवरी राइटर को लगता है कि ये क्या बोल रहा है यार, इधर कीवर्ड ये कैसे मैं हटा लूँ इस पैराग्राफ पे ये चीज, राइट. और कभी कभी होता था ना, तुमने पैराग्राफ लिख लिया बहुत अच्छा से, आर्टिस्टिक पैराग्राफ है, राइट, फिर एक कीवर्ड आ जाता है एकदम परफेक्ट है, पढ़ने में तुम वाह इसको पुलित्जर प्राइज मिलना है टाइप लेवल, यू नो. फिर एक कीवर्ड आ जाता है बीच में, बहुत गुस्सा आता था. हाँ, आई हैव कम टू अंडरस्टैंड नाउ कि वो मैं पुलित्जर प्राइज के लिए नहीं लिख रहा हूँ ब्लॉग. राइट, वो ऑब्जेक्टिव ब्रीफ में objective again, read brief guys. read the brief guys, read the brief, that's very important. Yes, the brief is the golden manifesto. Yes, speaking about writing, आजकल तुम लिख रहे हो क्या? You write? No, I don't get the time. I try to write a few poems here and there just to express my feelings, but writing in the sense, no, not really. पता नहीं यार, टाइम एकदम टाइम नहीं मिलता मेरे को. इनफैक्ट इवन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और जो भी मिलता है I don't feel like reading anything, which I hate. I really like to read, but yeah. When's the last time you read a novel or completed a novel? Kafka on the Shore, 1 महीना हो गया I guess. 1 महीना, and you're calling yourself that you didn't have time to read? हाँ, क्योंकि मेरे पाइपलाइन में इतने सारे बुक्स हैं I want to complete, but I couldn't. मेरे को पढ़ना था क्योंकि मेरे को बहुत वो रशियन राइटर्स के भी बुक्स पढ़ने थे, मेरे को दोस्तोयेव्स्की पढ़ना था. अच्छा. मेरे को बहुत मन था उसके लाइक शॉर्ट स्टोरीज वगैरह. हाँ, सोफिस्टिकेटेड हो रहा है तुम्हारा टेस्ट. मेरे को काफका का बुक पढ़ना था, वो क्या तो नाम था, वो पीनल कॉलोनी या समथिंग लाइक दैट. उसका प्रेमाइस इतना अच्छा लगा, बट टाइम ही नहीं मिल रहा. सो नोप. टाइम का इशू है. मेरे पास 4 बुक्स पड़ा हुआ है अभी टेबल पे, विच मैं सोच रहा था कि मैं घर जाके मुझे टाइम मिलेगा, घर जाके यू नो मुझे आई विल रिलैक्स अ लिटिल बिट, अगर मैं आराम करूंगा, बट नहीं, अभी तक मैंने छुआ भी नहीं है. यू नो, वेरी हाई होप्स. मैं सोच रहा था कि मेरा लेओवर थोड़ा 2 घंटे का है एयरपोर्ट पे. मैं एक बुक खत्म करूंगा, ठीक है, 2 घंटे में. 2 घंटे में एक 100 पेज का बुक है. एक बुक खत्म करूंगा मैं, घंटा 2 पेज पढ़ा मैं. Yeah, that's life for you. Nothing goes according to the plan. Nothing goes according to the plan. और ये भी बोलना एक्चुअली गलत है कि टाइम नहीं है. एक्चुअली टाइम रहता है, but you also need to be in a mindset, right, to do something. Correct. पढ़ने का माइंडसेट होना चाहिए. तुम्हारा क्या है? What's your preference? तुम्हारा माइंडसेट क्या है? When do you feel inspired to read कि मुझे पढ़ना है ये चीज? Do you force yourself या तुमको वो फीलिंग आना चाहिए? नहीं, there is no feeling. It's just कि मेरे को I should be feeling calm and composed. That's it. कभी क्या होता है ना कि you just have 1 hour or 1.5 hour at your hand, and you need to do something that can entertain you
in a second, right? Instant gratification you need. तो Hmm. वो वैसा टाइप का जो फीलिंग आता है, then reading is out of the option, because it's a long term pleasure sort of a thing. Then you go to watch a movie or YouTube shorts and Hmm. all that, right? Hmm. So Hmm. when you don't have that, जब वो दिमाग में नहीं रहता कि ठीक है मेरे पास 1 घंटा है और 1 घंटा में ही मेरे को जो करना है वही करना है, तो then I can probably start Hmm. reading. And once you start reading, then at least once I start reading, I can't stop. दूसरे दिन तीसरे दिन somehow time निकल ही जाता है. Problem is with starting, taking that first step, 5 pages. Right. 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 हाँ. And most books ऐसे ही होता है. First 2 chapters is बहुत boring यार. हाँ, मतलब obviously राइटर को थोड़ा तो टाइम चाहिए होगा अपने कैरेक्टर और प्लॉट को बिल्ड करने के लिए, but Right. Right. खुद का माइंडसेट भी. बट एनीवेज, बुक्स के बारे में बात करते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय किटी. आर यू Good. गाइस आर यू गाइस आल्सो ऑन यूट्यूब? We are. ओके. लाइक We are on YouTube. एक्टिवली सो, और like नहीं नहीं बहुत inactively so. like yeah, YouTube like B2B, right? Yes. B2B is like YouTube is very YouTube हम लोग it's only the reason why we're using YouTube is because हम लोग community heavy है बहुत. Our brand is very focused on communities and we love sharing knowledge and sharing new things. So जब भी कुछ नया आता है and whenever we hold meetups or talks that can help the tech community, we record it and put it out on YouTube. But उतना YouTube में focus नहीं है. थोड़ा change कर रहा हूँ मैं. We're I putting mean, like the we're target trying to audience also might not be on YouTube. right नहीं है YouTube पे नहीं है. You will never see कि हाँ मुझे एक सर्विस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना है. YouTube जाता हूँ. I'll check out the YouTube channel. नहीं होता ना. I'll check out the LinkedIn maybe, but I'll check out their website definitely. I'll check out their LinkedIn maybe, but I'll check out the YouTube very rarely. But in general, as a content guy, what do you think is happening on YouTube, especially YouTube marketing? YouTube में ना तुम मार्केटिंग नहीं कर सकते हो यार unless and until you're a YouTuber. That's what I'm feeling. क्योंकि कितने सारे लोगों ने एड ब्लॉकर लगा के रखा है. नहीं, yeah, that is there, but like the branding, like organic. ब्रांडिंग से YouTube में ना for me at least YouTube में either you're a content creator जो something interesting के बारे में बात होता है. जैसे तुम जो देखते हो what's that thing? Kurzgesagt. हाँ, that. And things like Vox, Bloomberg, maybe Al Jazeera, and people like MKB, Insider. Mr. Who's the Boss, Insider, and all of these interesting videos, right? People YouTube में उसी को देखने के लिए जाता है, or else music या short stories, series. I think that is what people want to see on YouTube rather than a brand coming and talking about this. Oh, maybe if the brand is very interesting, let's say I'll tell you a case. Okay, जैसे Nike, right? Nike ने अपना YouTube channel खोला and Nike is talking about different ways to the best way to run. Right, Nike का एक वो आता है the best way to run or how to start your marathon journey, right? These shoes are good for running, right? So how to start a marathon journey. अगर एक brand वैसे करके शुरू करता है with a good athlete, right? Partnership करके, maybe I'll listen to that brand. क्योंकि मुझे inherently मेरे दिमाग में पता है कि ये लोग मुझे sell करने के लिए आए हैं. So yeah. That's the bottom line. I feel कि YouTube में I don't see brands. I don't see any heavy brand thing unless and until you're running an ad. Yeah, but like you can use it to become like thought leaders in your segment, like whatever You thing can, you're selling. you can, but I don't see a lot of brands doing it. Maybe I'm not exposed a lot, but I don't see a lot of brands doing it. For example, जैसे मैंने बोला Nike can do something like that.
Puma can do something like, कि हम something like how to become better at lifting or something. Under Armour can do a series on how to lift. Road to becoming a better bodybuilder or something like that. I don't know, but these brands usually want to do collaborations rather than become, set up their own channel. Yeah, but right. But B2C companies के लिए, I think I at least I when I was in the space, I saw a lot of opportunity. Like I was in the edtech space, right? So there's a उनके lot तो of है. competition in YouTube. Yeah, क्योंकि people used to come to YouTube for information, and the information that is जो वो कौन से information को believe करेंगे, right? That is where your brand हाँ, equity comes in. What is right, the weight of the right. brand? So if they search like what is the best college in USA or Canada, whatever, videos from multiple edtech startups or companies will pop up. Now, which one do they click? That will depend on the organic presence of that brand's video and how well they are placed and the SEO part, Right, right? right. सही है. Trust factor आता है उधर पे एक. हाँ, तो वहाँ पे भी आई थिंक बिल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आई थिंक, एज Organically कम्पेयर टू. तो बहुत difficult है. I feel like organic brands are like organically grow करना brands are dead. Unless and until you need to have a very 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 like square times uh, unique value proposition. So if if your if marketing is divided into inorganic and organic, and say you have 100 rupees to spend, how would you divide it? if I have a good team, if I have like a really creative team, I would divide it into 60 and 40. 64? When if I'm 60 for organic, 40 for Okay. inorganic. If I'm just starting, okay, Hmm. if I'm just starting, over time I would like it to go to 80 and 20. 80 organic, 20 inorganic. But if I know कि मेरा team उतना creative नहीं है, right, and I cannot afford such a creative team at this point of time, I will do 40 organic and 60 inorganic. Hmm. I was having this conversation with someone. So someone said it like that. Inorganic, you need to survive. Organic, you need to live. Something like that. That's very interesting thought. Inorganic, you need to. It's for survival. तुम्हारे रोज के रोटी देने के लिए है. और ये मैं जो ऑर्गेनिक में 80 और 20 जो बोल रहा हूँ, राइट, इट्स लाइक जो 20 है तुम्हारा रेनी डे फंड है इनऑर्गेनिक. ये जो 80 है तुम्हारा एसेट्स है, बैंक में पैसा है. 20 तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट टाइप्स है. तुमको ये एक्यूमुलेट करता रहेगा. योर लीज विल कीप कमिंग इन थ्रू इनऑर्गेनिक, राइट. यू कांट स्टॉप इट. एंड एनी ब्रांड जो अपना इनऑर्गेनिक स्टॉप करता है ना, they run the risk of market a lot. Yeah, totally. Market issues बहुत risk. If the market has issues, the inorganic people who stop inorganic traffic tend to lose a lot. I mean, totally at the mercy of the algorithm, right? Totally at the mercy of the algorithm. Yeah. Yep. That's why like COVID times पे बहुत सारे brands बढ़े in size and बहुत सारे brands डूब भी गए. That's a huge reason. And yeah, what interesting चीज़ है. So I'm very curious, Abhi, when we're talking about work and all. Gurgaon में what is the working like work environment, work culture क्या है जो होता है ना, like work crowd? I'm not sure. I've never lived there or never have I heard any story. What's the feel like? Okay, so I'll tell you. So where I stayed, okay, the Haryana border is like 10 minutes to 20 minutes away. Okay. Okay, so even if I say that I am in Gurgaon, that is only probably technically true, but I'm actually
Did you see Courage the Cowardly Dog when you were a kid? हाँ वो हाँ 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 देखा था ना? हाँ, तो that's विंडमिल that's that's how it is. I'm in the middle of nowhere basically. चारों तरफ बस ऐसे नॉन एग्जिस्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या लैंड मास है और बीच में हमारा कॉलेज है. So if you ask me about all that work culture thing and anything, I don't know because I'm very detached. I rarely go to the main Gurgaon city and all. So I don't know, but काफी work is ironic नहीं है? ironic. That's how my life has been. But क्या बता सकता हूँ मैं तेरे को भी. मैं कभी कभी गया था, so there are like those just like we know, right? What tech parks and everything. हाँ So people just go to tech parks, they work 7, 8, 7, 8 बजे घर आ जाते हैं. That's it. That's the life. Enjoy करते हैं थोड़ा बहुत और घर जाते हैं. इससे ज्यादा मैं कुछ insight में दे नहीं पाऊंगा अभी. But what did you mean when you said कि what's the work culture like? What was the real question? Work culture, like see, we stayed in Chennai for 3 years, I think. So, like I stayed in Chennai for 3 years. You settled there longer, right? So Chennai mein what I've noticed is the work culture and the work life, it's a little bit evenly paced. Okay. You know, Evenly paced in in like work life balance, so the evenly paced है Chennai companies. हाँ तो That's what I. नहीं तो that totally depends on the company culture, right? हाँ, that's also true. That's also true. But like वो होता है ना कि I don't know, just the flow of things seemed very even to me. You know कि हाँ रश होता है, हर कंपनी में रश तो होता है, हर कंपनी वो होता है. But that I don't know. It felt like कि it's very evenly paced to me. Like my perception है. But when I came to Bangalore, right, it may just be because of the city was very, Chennai is a very wide, big city, right? And सब कुछ बहुत सारे clusters नहीं है सब कुछ. So It's a you big felt city. more energy in Bangalore, is it? I felt more rush in Bangalore. More rush, right? Rush होता है ना वो जो that New York rush हाँ. types feeling आता है. Good. So I have a very good question leading up to this. कोलकाता में जब गए तो कैसा लगा? Kolkata was, see, okay, I'll tell you for my defense, I did not stay in Kolkata for हाँ, long, but right? did it feel like rushed or slow or whatever? It felt overwhelming. It felt, I don't know. See, I'll tell you the experience. I got down from the airport, I got into a cab. Like Navadvip is like 4 hours from where I was staying, right? From the Kolkata airport, it's 4 hours from where I stayed. So I got down from the cab. I got down at like a junction where I ate some kathi rolls. एक kathi roll खाया मैं मम्मी के साथ. So when that happened, right, I saw like a lot of people just rushing about here and there. छुट्टी हो रहा था. The company का छुट्टी नहीं, company का वो work hours खत्म हो रहा. People came out. And I saw them like people coming out, but they were very like jolly and they were very energetic कि कहीं खाने जाना है ये सब चीजें. Energy बहुत था, there's a like electrifying energy there. बहुत धूल बहुत था. Though the I don't know if that answers your question. It's just like a huge barrage of emotions, that one second. It's like a huge barrage of emotions in that space, but it did not feel rushed at all. Rushed तो नहीं था. It was just. मेरे experience, I think Kolkata is a bit slow paced as compared to Bangalore. तो I guess थोड़ा बहुत डिफर करता है लोगों का perception और लोगों का thinking के हिसाब से, because people there are, I would say this, people are not that, काम करना है, hustle, that kind of a thing. वो तो नहीं है. That kind of a thing was severe in Mumbai when I went to Mumbai. That sort of culture, that sort of thinking कि I'll just complete my job, I'll go home and I'll then get into the another venture that I have, and I'll walk into that for some other धंधा. हाँ, धंधा हो या फिर podcast हो या कुछ भी हो, right? Anything that I don't know that they like. That's true. Even Chennai में नहीं था. Chennai में it's like we'll work,
for the office, we'll come back, we'll sleep. रात के 10 बजे तक सब सो जाएंगे, 11 बजे तक roads are deserted. Right. Right? वो But Bangalore, बैंगलोर में तो नहीं probably है. no. Yeah. बैंगलोर में that's not the case. बैंगलोर में it's like सुबह 9 बजे even if you go to the gym, सुबह 9 बजे जिम पूरा पैक्ड है. पूरा जिम पैक्ड है. 9 बजे के बाद everybody leaves for office at 10, and 10 to 12 is like hell in Bangalore if you're in the traffic, and especially if you're in outer ring road. I've been in cases where I've stood face to face, like, in a city bus, face to face with people, just stuffed like, a sandwich, and for like half an hour in traffic. And once you so that's your first experience of Bangalore rush. Okay, So everybody you is use rushing. bus. You use bus for your I transportation. used bus for 2 months, and when I went to Bangalore. Fair. And it was like it took me 2 hours to get to office, right, which was like only 17 kilometers away. So फिर क्या हुआ कि that's your first rush. सुबह उठते ही तुमको rush मिलेगा. Then उसके बाद ऑफिस जाओ. ऑफिस में भी it's like everybody is like, everybody is energetic. Everybody, अगर you feel like everybody is working, तो that environment is created. And उसके बाद खत्म होने के बाद Friday night में ना, if you don't have plans, unless and until you're me, who is a little bit callous to plans or something like that. If you have FOMO, if you're someone who's really prone to FOMO, you will feel really worthless in Bangalore. Everybody has plans on Friday night in the office. Yeah. Everybody. So I can't go there essentially. That's what you're telling me. No. See, you're someone like me, so I think you'll be just okay with coming back and chilling. But you get out on a Friday night in Bangalore, ठीक है, 5 बजे के बाद ऑफिस डिजर्टेड हो जाएगा नीचे, like office पूरा deserted types हो जाएगा. So you go out, every bar is packed, every street where there's a good eatery is packed, every movie hall is packed, the malls are packed. Saturday, everywhere is packed. People are coming out buying. I don't know where they're getting all this money to buy all this stuff, but people are spending like hell. They're going, enjoying their life. Sunday के 7-8 बजे तक people are still out, right? And Mondays and then the realization hits. हाँ, कल Monday है. right? So that's the thing. That's why I feel like Bangalore is it's rushed. And so now, do you have your own personal vehicle? I don't. I just stay close to office. Oh, right. मतलब what used to take 2.5-3 hours by bus now takes me 30 minutes by bus, and it's a very straight road. Bus always खाली है, क्योंकि by the time the bus reaches my place, it's dropped off most of the people. Okay, got it. So it's like ना रहेगी बात ना बजेगी बांसुरी kind of solution. हाँ, तो मैं बस पे चढ़ जाता हूँ, मुझे सीट और मिलता है. सीट मिलने के बाद I reach office and like it's a very pleasant walk to where my office is. बहुत अच्छा like posh neighborhood है, and office भी like it's in a very good industrial area, spacious. तो मैं आराम से जाके it's nice. It's a nice walk. That's the only walk I get in the whole day. So you intend to stay in Bangalore for long? Thinking, I feel like for me, the future is in Bangalore. Okay. At least in India, that's what I feel. Because I want to continue working in the tech space. Okay. मुझे tech space में काम continue करना है, क्योंकि right, I always like technology a little, working with tech and working with all of these things. मुझे tech के लिए लिखना भी पसंद है. तो personally I have very different tastes, you will confirm, but tech के लिए लिखना पसंद है in professional space. It's logical, tech में. Logical, safer, that one space, no one's going to put it down. Right. New things it's very safe. New things, keep coming, disrupting tech. Disrupting. पसंद है, तो that's why I want to stay. And when it comes to tech, I don't think anybody can beat Bangalore in India.
Yep, totally. It's a good Yeah. switch from edtech to tech. Yes. Oh, I used to work in an agency where I used to handle consumer brands. Okay, I used to struggle with writing copies about it. consumer brands, huh? Consumer. I used to work for this elder care brand. There was Hmm. an agency, but you know what? I learned a lot of empathy when working with consumer brands. I could not write your visa is cancelled. Breaking Bad. Do you remember? Breaking backlog. Breaking Backlog. Oh yeah. Oh my god, how can I forget that? That guest didn't show up, no, in the webinar. Yeah, man. I just keep thinking about that episode, and मेरे को दिमाग में ऐसा आता है. That is what happens when you're too creative. Right. But for my defense, we took her approval. Yeah, Breaking Backlog. In retrospect, it feels so bad, but actually the copy was so creative, so damn It, creative. it was damn creative. We got a lot of likes. Lot of likes, yes. We got a lot of likes. We got like a lot of email responses as well. Yeah, a lot of Remember? buzz created as well, right? Because it's an Yeah, actual yeah, yeah. problem. Yeah, it was an actual problem, and people are actually interested to understand and learn about it. I don't know what happened to the guest, but we took their permission as well. But I don't know, last minute changes. Uh-huh. Yeah, who can predict the market? Yeah, like talking about empathy, right? Yeah, talking about empathy, I learned a lot of empathy. I learned how to speak to people more kindly, and I learned how to, at least for once, let my logical brain stop thinking or stop talking. You know, I learned that actually, when you talk to consumers, like kindness is also a really good marker. Yeah. So in design thinking, empathizing is the first step. Empathizing is really important. But you can put all of that out when you're in tech. You know, Hmm. it's just about most of the times when you're talking about tech and when you're talking about really you do need empathy, but most of the times people are not searching for empathy or sympathy, right? No. Then But like building your like customer persona and thinking about that customer person or thinking in their that's shoes also important. requires empathy, lot of empathy. It requires a lot of empathy. So I learned a lot of empathy there, and I learned where you need that empathy and where you don't need the empathy. Yes. So that I feel like I feel like I've been very lucky, to be honest. Now that I think about it, कि सारे brands जिसमें मैंने काम किए हैं, Hmm. it's everything has taught me certain things. For example, GREH ने मुझे सिखाया है कि okay, I'm just taking the name because it's there on LinkedIn. Why not, right? Or you can beep it out. You are the boss. Yeah. It's on LinkedIn. Everyone knows where I worked. Okay. So GRH में I learned कि metrics कैसे देखना है, how to metrics के साथ काम कैसे करना है, logically कैसे सोचना है, results कैसे लाना है up for a campaign. When I worked in my second ad agency experiencing, I learned कि consumer के साथ कैसे बात करना है, customer के साथ बात कैसे करना है, customer को बताना नहीं है, customer के साथ बात करना है. Like it's not talking very to important. it's not talking to your customers. It's there Talking on the with. talking with and talking together. Hmm. Experiencing that feeling together. वो मुझे सिखाया. Conversation. Conversation, right? वो सीखा. फिर उसके बाद I went to another company, and अभी जो current company में है, उससे मुझे सीखने को मिल रहा है कि you actually build big communities. Community का power कितना important है, community का power कितना important है. That's what my current company is teaching me. And it's very it's good mix of experiences. बहुत different mixture of experiences है. That's what I felt. Interesting. Uh, I guess we are low on time, but I had a lot of questions to ask you, especially on now that you are on the managing front. I wanted to ask a few managing questions as well, but I guess we can keep it for some other day.
We'll But keep it for the Nivetha episode. yeah, yeah. But I hope this episode was a bit informative for people who were looking for some more Yeah. information from our videos. We'll try to bring out more experts, not experts, but definitely experienced people from various domains Uh, so that we can right. have nice conversations and informative conversations. Yeah. Yeah. Like, we will talk about, how can I put this lightly, bullcrap most of the episodes, but sometimes we will do informative episodes also. So Yeah, yeah, yeah. We'll find that balance. we'll find that balance. We're learning. ठीक है. But do Oh show us your support by sharing, liking, subscribing. That is what all YouTubers ask, but we ask you too. So please, thank you. yeah, thank you so much. I feel like even if you just subscribe and drop a like, it will be really helpful to us. Okay. So I guess that's a wrap, right? Yeah, yeah, yeah. For this episode. 9:30 Okay. almost. 9:30 almost. Oh, I didn't remember. You have that 9:30 thing, no? Yeah, yeah. This 9:30 thing. What can I say? Okay. Okay. Thank you for anybody who's listening. Thank you for listening, for joining in, and मिलते हैं अगले episode में. Yeah. Happy holidays. Happy weekends. Bye bye. Good night. Good night.